Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great. आइए इस वीडियो में बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करेंगे जिसको हम कहते हैं इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सबको लगता है कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड आर वन एंड द सेम थिंग, बट द फैक्ट इज दे आर डिफरेंट. Increase is different than expansion and decrease is different than contraction. How they are different? Let's try to understand. But before we proceed, please make sure that you subscribe our YouTube channel, follow me on Instagram, follow me on Telegram, and you just need to search Eco Seco for that. नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है. Let's talk about expansion and contraction of demand in this video. एक्सपैंड मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब घटना, इंक्रीज मतलब भी बढ़ना होता है, डिक्रीज मतलब भी घटना होता है, बट हाउ दे आर डिफरेंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक्सपेंशन ऑफ डिमांड or contraction of demand takes place only and only because of the change in price. So expansion and contraction takes place because of the change in price only. Other factors in expansion and contraction are assumed to be kept constant. मतलब expansion and contraction तब होता है when only and only the price of the commodity changes and factors other than price like price of related goods, income of the consumer, taste, fashion, preference, everything else remains the same, right? So everything else remains the same. So expansion and contraction of demand is an event that takes place due to the change in price only. मैं बार बार ये बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे रखे खाली प्राइस चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी. नाउ इसमें क्या होता है? सो इफ डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, it can either expand or it can contract. एक्सपेंशन हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं, या फिर एक्सपेंशन क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस. एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस. वी ऑल नो दैट व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस and when price rises demand falls. So expansion is when price of the commodity falls and contraction is when price of the commodity rises. So that means expansion of demand is a situation when demand for the commodity rises because of the fall in price only, other factors are kept constant. And contraction of demand is an event that takes place due to the rise in price only, other factors are constant. So how do we denote एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? पहले इसको हम लोग समझते हैं. सपोज एक टेबल बना रहा हूँ, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस लेट्स से 1 2 3 4 एंड क्वांटिटी डिमांडेड 10 8 6 एंड 4. इसको पहले हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड. सो प्राइस इज let's say 1 2 3 4 and quantity demanded let's say 2 4 6 8 and 10. So when the price is 1, demand is 10, 2 में it is 8, 3 में it's 6 and 4 में it's 4. So how is my demand curve here? My demand curve you can clearly see is a downward sloping curve, right? अब इस डिमांड कर्व को जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, राइट, ऊपर से नीचे वी कैन सी दैट इफ वी ऑब्जर्व द डिमांड कर्व फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वी कैन सी दैट द डिमांड इज एक्सपैंडिंग because of the fall in price. The demand is expanding because of the fall in price, right? And if we see that इसको हम bottom to top देखते हैं, तो वी कैन सी दैट डिमांड इज कॉन्ट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस. ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे देखें वी कैन सी डिमांड इज एक्सपैंडिंग, डिमांड इज राइजिंग. देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसको हम ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं. ए से बी क्या देख रहे हैं? ए में डिमांड वॉज 4 एट द प्राइस ऑफ 4. जब हम बी में आए डिमांड बिकेम 6 बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस. अगर हम सी में आते हैं डिमांड बिकेम 8 बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस अगेन. सो ऊपर से नीचे जब हम सेम डिमांड कर्व को देखते हैं उसको हम एक्सपेंशन डिनोट करते हैं,
और नीचे से ऊपर जब हम देखते हैं उसको हम क्या डिनोट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। सो द सेम डिमांड कर्व में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज इंडिकेटेड, इज डिनोटेड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। we denoted when the demand curve is moving downward, इसको जब downward movement देख रहे हैं, downward movement along the same demand curve indicates an expansion and upward movement along the same demand curve indicates a contraction, and expansion takes place because of the fall in price and contraction takes place because of the rise in price. So I hope this is clear. expansion, so expansion जो है किसके चलते होगा, अब अगर हम flow समझें, so expansion takes place because of the fall in price and denoted by downward movement along the same demand curve. This is what you're supposed to write. And contraction क्या है, because of the rise in price. Contraction takes place because of the rise in price. And how it is denoted, upward movement along the same demand curve. तो इसको हम collectively, अगर हम वापस इसमें आए, so fall in expansion is denoted, takes place due to fall in price, denoted by downward movement along the same demand curve. इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, upward movement along the same demand curve. इसको collectively, जब डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस ओनली, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहते हैं कलेक्टिवली, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर क्वेश्चन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के बारे कुछ पूछा हो, दैट मीन्स यू बीन आस्क्ड अबाउट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम कहते हैं। तो एक्सपेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। याद रहे, हम इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। I hope this is clear to everybody. This entire thing is clear to everybody. Contraction and expansion is clear to everybody. अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, what are the reason for an expansion of demand? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का एक ही रीजन है, फॉल इन दी प्राइस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सबको लगता है एक्सपेंशन की बात हो रही है, तो सबको लगता है इंक्रीज की बात हो रही है। दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एवरी अदर फैक्टर, बट एक्सपेंशन में एक ही फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन में भी एक ही फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, प्राइस। आई होप द वीडियो इज क्लियर टू यू एवरीबडी। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड डू सजेस्ट द वीडियोज, टू डू give the reference to your friends as well, so that we can grow along with you. Thank you so much.